रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आपके लिए हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को सबसे पहले आपको एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप में आपको देखिए ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। सिस्टम एप्लीकेशन पे टैप करना है। इस वाले पेज में नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको एक क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में छोटा सा माइक होता है, माइक को आपको हल्का से साफ करना है। होता क्या माइक का जो साउंड होती है जिसके कारण कॉल में आवाज नहीं जाती है, तो आपको ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है। अब देखिए अगला काम मोबाइल के सॉफ्टवेयर आपको लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को